Assalamu alaikum students. I am Wasim Ikram. This is the 10th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. कैसे हैं आप आज? इंशाल्लाह अच्छे होंगे. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी मिन टर्म्स के बारे में, मैक्स टर्म्स ने पढ़े थे, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस की हमने बातें की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. फिर हमने उसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी की थी इसमें. तो आज इंशाल्लाह उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हम एक नया तरीका देखेंगे कार्नॉफ मैप्स का. Karnaugh maps, we said, provide you an alternate way of simplifying expressions. They provide you with a systematic way of simplifying expressions. लास्ट टाइम हमने बात की थी जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का. आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए. अगर आप काफी अरसे से सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है. अगर छोटी एक्सप्रेशन हो तो उसको तो आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट फॉर लॉन्ग एक्सप्रेशंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसमें एरर के चांसेस हैं. तो उधर कार्नॉफ मैप्स काम आते हैं इसमें. So before we talk about Karnaugh maps and how we use them to simplify lengthy or complex Boolean expressions, let us revise the contents which we talked about or discussed in the last lecture. Last lecture में हमने शुरू की थी standard forms of sum of product expressions and product of sum expressions. हमने ये कहा था कि अगर जो मिन टर्म्स आ रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में या मैक्स टर्म्स आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन में, उनको अगर स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो वो काफी बेहतर है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि वो ये जो एक्सप्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशंस जो हैं काफी जगहों पे यूज हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल एक हमने बात की थी कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप बड़ी आसानी से एसओपी एक्सप्रेशन को पीओएस या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसमें उसका फायदा ये होगा कि अगर लेट्स से कोई फंक्शन है, कोई सर्किट है, उसका फंक्शन जो है उसमें 5 मिन टर्म्स हैं. लेट्स से 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 5 मिन टर्म्स हैं. तो लेट्स सपोज उसका सर्किट जो है इन 5 मिन टर्म्स की जो एक्सप्रेशन है उसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो लेट्स से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक आएगा. उसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैक्स टर्म्स की फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन लिखें तो उसका हो सकता है सर्किट आसान हो. उसके हो सकता है तीन उसके मैक्स टर्म्स होंगे. तो एक तो ये फायदा. दूसरा हमने ये कहा था कि अभी जो हमने बात की कार्नॉफ मैप में अगर एक्सप्रेशन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो उस एक्सप्रेशन को आसानी से मैप करना कार्नॉफ मैप में सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान हो जाता है उसमें. तीसरा हमने ये बात की थी जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हैं वो एक बड़ा रेगुलर सा स्ट्रक्चर है. उसमें एंड गेट्स की अरे होगी और गेट्स की अरे होगी. तो अगर आपकी एक्सप्रेशन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो बड़ी आसानी से आप प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजाइन डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. तो ये 3 बड़े फायदे थे. एक और हमने फायदा देखा था कि अगर आपके पास ट्रुथ टेबल किसी एक्सप्रेशन का बनाना है तो अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो अगेन आप बड़ी आसानी से ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं उसमें. So how do we represent a standard sum of product expression in a truth table? बड़ी सिंपल सी चीज थी. सम ऑफ प्रोडक्ट जो एक्सप्रेशन है स्टैंडर्डाइज, उसके जितने भी मिन टर्म्स हैं उनको आप वंस की सूरत में आउटपुट पे लिखते हैं. सो लेट्स सपोज 3 वेरिएबल के आपके एक्सप्रेशन है तो आपका जो ट्रुथ टेबल है उसमें 8 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगी. लेट्स से आपकी जो स्टैंडर्डाइज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के एक्सप्रेशन है उसमें पहले 3 मिन टर्म्स हैं. तो ट्रुथ टेबल क्या बनेगा आपका? पहले 3 जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो 1 1 1 होंगी, बाकी सारे जीरोस होंगे. इसी तरह अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है उसको ट्रुथ टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेसिकली लेट्स सपोज कि आपके आखिरी 3 जो है मैक्स टर्म्स हैं वो आपकी स्टैंडर्ड जो है पीओएस एक्सप्रेशन में आपका ट्रुथ टेबल क्या होगा? अगेन 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं तो 8 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे. तो आखिरी 3 जो मैक्स टर्म्स जो आपके एक्सप्रेशन में हैं उनको आप कैसे लिखेंगे? आउटपुट में जीरोस लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, जीरोस लिखेंगे. बाकी जो मैक्स टर्म्स जो है मिसिंग है उस एक्सप्रेशन से उनको 1 से आउटपुट में रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये आपका तरीका हो गया कि आप स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस को ट्रुथ टेबल की फॉर्म में लिखें. ट्रुथ टेबल से वापस आप डिटरमिन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो है सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन क्या है एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन क्या है. अगेन लेट्स सपोज आपके पास 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल, बड़ा सिंपल सा ट्रुथ टेबल है, 4 इनपुट्स हैं. आपका जो पहला लेट्स से मिन टर्म है वो 1 है, बाकी सारे आउटपुट्स जो है 0 0 0 है. आपकी एक्सप्रेशन क्या होगी? उसमें सिर्फ एक मिन टर्म आएगा, वो पहला वाला जो है ए बार बी बार जो है. इसी तरह लेट्स सपोज आपके पास 2 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है, 4 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल है और उसमें आपके पास लिखा हुआ है 0 0 1 1. अच्छा, अब इसको अगर मैक्स टर्म्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है तो कौन से आपके ख्याल में 2 मैक्स टर्म्स होने चाहिए? जहां जहां भी 0 लिखा हुआ है बेसिकली वो बता रहे हैं कि वो मैक्स टर्म्स होने चाहिए. तो आउटपुट में क्योंकि 0 0 1 1 है सो पहले 2 मैक्स टर्म्स आपके एक्सप्रेशन में आ जाएंगे. ठीक है. सो अगर आपके पास 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में पीओएस एसओपी हो तो आप बड़ी आसानी से ट्रुथ टेबल उसका बना सकते हैं. अगर ट्रुथ टेबल हो बड़ी आसानी से आप वापस एक्सप्रेशन के तौर पे उनको लिख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद कार्नॉफ मैप्स. Let us see what is a Karnaugh map.
Karnaugh map, as we said in the last lecture, is basically an array of cells. कितने cells होंगे बेसिकली डिपेंड करता है कितने वेरिएबल की आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं. लेट्स सपोज 2 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है ए बी या सी डी है ई एफ, कोई से भी 2 वेरिएबल हो, यू रिक्वायर ए Karnaugh मैप ऑफ 2 वेरिएबल्स. सेल्स कितने होंगे? 4 सेल्स होंगे. ठीक है, अगर 2 वेरिएबल के एक्सप्रेशन को देखा जाए कितने मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स होते हैं, मैक्सिमम 4 मिन टर्म्स होंगे या मैक्सिमम 4 मैक्स टर्म्स होंगे. इसी तरह Karnaugh मैप जो है 2 वेरिएबल का, उसमें 4 ही सेल्स होंगे. जो चारों सेल्स हैं वो इंडिविजुअली हर एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हर एक मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरह अगर आपकी 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है इन ए बी सी, सो कितने वेरिएबल का Karnaugh मैप होगा? अगेन 3 वेरिएबल का Karnaugh मैप होगा. अब 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन में कितने मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स होते हैं? बिल्कुल 8 होते हैं मिन टर्म्स या 8 मैक्स टर्म्स होते हैं. इसी तरह जो Karnaugh मैप है 3 वेरिएबल्स का 8 सेल्स होंगे. इंडिविजुअली हर सेल जो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या एक मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. इसी तरह यू हैव ए 4 वेरिएबल Karnaugh मैप एंड ए 5 वेरिएबल Karnaugh मैप फॉर सिंप्लीफाइंग 4 वेरिएबल एक्सप्रेशंस एंड 5 वेरिएबल एक्सप्रेशंस रिस्पेक्टिवली. ओके, अब 2 वेरिएबल की जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना जो कन्वेंशनल तरीका है बाय अप्लाइंग रूल्स और वो बाकी थ्योरम्स वगैरह, इट्स वेरी सिंपल. 2 वेरिएबल की एक्सप्रेशन आसानी से हो जाती है. 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करना मुश्किल है, तो उधर आप के मैप्स और Karnaugh मैप्स यूज कर रहे होते हैं. 5 वेरिएबल से अगर एक्सप्रेशन बढ़ जाए, 6 वेरिएबल्स, 7, 8, 9 वेरिएबल्स, देन ऑफ कोर्स Karnaugh मैप्स डू नॉट वर्क. जरा उनको बनाना, उनको यूज करना मुश्किल हो जाता है. सो अगेन एक और तरीका है जो वो भी इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस टुडे टॉक अबाउट Karnaugh मैप्स फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स एंड 5 वेरिएबल्स. लेट अस सी हाउ यू ड्रॉ ए 3 वेरिएबल Karnaugh मैप. 2 तरीके हैं. जो 8 सेल्स हैं जो एक 3 वेरिएबल Karnaugh मैप में होते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 रोज एंड 4 कॉलम्स. या आप जो 3 वेरिएबल Karnaugh मैप है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 कॉलम्स एंड 4 रोज. दोनों केसेस में 8 सेल्स आ रहे हैं, वो कॉलम रिप्रेजेंटेशन यूज करें या रो रिप्रेजेंटेशन यूज करें, दोनों केसेस में जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो एक ही होगी. 4 वेरिएबल जो Karnaugh मैप है बेसिकली उसमें हमने बात की थी 16 सेल्स होंगे, 16 सेल्स. वो कैसे ड्रॉ होगा या डिस्क्राइब करेंगे? बेसिकली दी 16 सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 कॉलम्स एंड 4 रोज. ओके, ये 3 वेरिएबल Karnaugh मैप और जो है 4 वेरिएबल Karnaugh मैप, इनमें जो सेल्स हैं वो हमने बताया था क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, आफ्टर हैविंग ड्रॉन द Karnaugh मैप्स फिर क्या करेंगे? बेसिकली नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको कहते हैं मैपिंग. सो यू मैप योर एक्सप्रेशन ऑन टू द Karnaugh मैप. अब एक्सप्रेशन मैप करने के डिफरेंट तरीके हैं. यहाँ तो आपके पास एक फंक्शन का ट्रुथ टेबल है. अब ट्रुथ टेबल से डायरेक्टली Karnaugh मैप पे आप 1s एंड 0s की फॉर्म में मैपिंग कर सकते हैं. उसमें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन है, उसके जो मिन टर्म्स हैं वो डायरेक्टली आप Karnaugh मैप में पर मैप कर सकते हैं. इसी तरह आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की एक्सप्रेशन है, उसके जो मैक्स टर्म्स हैं वो आप Karnaugh मैप पे मैप कर सकते हैं. अगर आपके पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन है या नॉन स्टैंडर्ड पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है, वो भी आप डायरेक्टली Karnaugh मैप पे मैप कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मैपिंग द एक्सप्रेशंस ऑन टू द Karnaugh मैप. ओके, मैपिंग क्या हो रहा है? बेसिकली आप 1s या 0s Karnaugh मैप पे लिख रहे हैं. ओके, इसका मैं तरीका बता दूं. लेट्स कंसीडर ए 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन जिसका एक ही मिन टर्म है a बार b. ठीक है, अब इसको कैसे मैप करेंगे Karnaugh मैप पे? 2 वेरिएबल का Karnaugh मैप होगा जिसके 4 सेल्स होंगे. ओके, उनमें से एक सेल जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा मिन टर्म a बार b को. अब उस सेल पे आप 1 लिख देंगे. बाकी क्योंकि वो मिन टर्म्स प्रेजेंट ही नहीं है, बाकी जितने भी 3 सेल्स होंगे Karnaugh मैप के वो 0s आप उस पे लिख देंगे. तो ये आपकी मैपिंग हो जाएगी. Now, after you have mapped the Karnaugh map, you need to go to the second step. What is the second step? Basically, आप grouping कर रहे हैं, right? So, by looking at the Karnaugh map, you would see groups of 1s and 0s. So, अगर आप जो है sum of product form की expression extract करना चाह रहे हैं, then you would form groups of 1s. अगर आप product of sum form के तरीके से एक simplified expression extract करना चाह रहे हैं, then you would be forming groups of 0s. ओके, ग्रुप्स का साइज क्या होगा? बेसिकली ग्रुप्स जो हैं 2 सेल्स का एक ग्रुप बन सकता है, 4 सेल्स का ग्रुप बन सकता है, 8, 16, 32, 64, बेसिकली पावर्स ऑफ 2. सो 6 सेल्स का ग्रुप नहीं बन सकता, उसमें 12 सेल्स का ग्रुप नहीं बन सकता, इट्स ओनली पावर ऑफ 2. अच्छा, नेक्स्ट चीज है जो ग्रुप है वो उसकी शक्ल क्या होनी चाहिए? बेसिकली वो एक कंप्लीट रो में 4 सेल्स का या 2 सेल्स का या 8 सेल्स का ग्रुप बन सकता है, या एक कॉलम वाइज 2 सेल्स का, 4 का, 8 का ग्रुप बन सकता है, या एक स्क्वायर शेप में 2 बाय 2 का एक ग्रुप बन सकता है, या 4 बाय 2 यानी 2 रोज में 4 कॉलम्स उनका ग्रुप बन सकता है. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू फॉर्म ग्रुप्स.
डायगोनल ग्रुप्स नहीं बन सकते इसमें, अगर डायगोनल वंस हैं या जीरो हैं उनका ग्रुप नहीं बनेगा, वो एडजेसेंट रोज या कॉलम्स में होने चाहिए. The other thing about Karnaugh maps is that we have said that a 3 variable Karnaugh map has 8 cells, 2 rows 4 columns या 2 columns 4 rows. इसको आप ऐसे व्यू करें कि ये एक 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है. दैट मीन्स जो आपस में कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं. लेट्स कंसीडर ए 4 वेरिएबल Karnaugh मैप जिसके 4 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं. उसको अगर आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे जरा सोचें समझें तो उसके जो है जो कॉलम्स हैं दोनों साइड पे वो आपस में मिल रहे हैं. इसी तरह जो रोज ऊपर और नीचे हैं वो भी आपस में मिल रही हैं. Now let us discuss how many groups we need to form and what should be the size of each of those groups. Basically number of groups depend करेगा कि वो कितने ones हैं कितने zeros हैं जो neighborhood में या करीब करीब हैं उसमें basically. So you start with the largest group. Let's suppose you have ones which are adjacent to each other and you can form a group of 8. So you would of course start with the largest group. Then again you would look at the remaining ones. If there is another one which has not been included into that group, then you form another group. So you could form another group of 4 or 2 variables or even a single cell. So the number of groups would be determined by the number of ones or zeros in the Karnaugh map. Now after having formed the groups, what is the next step? बेसिकली ग्रुप जब आप फॉर्म कर लेते हैं आपने एक्सप्रेशन जो है सॉल्व कर ली. ना इफ यू एक्सप्रेस दोज ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स यू हैव द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. सो ये सारे हम स्टेप्स बारी बारी देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो Karnaugh मैप्स जो हमने 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल Karnaugh मैप्स की डिस्कशन की वो कैसे बनाते कैसे हैं. सो वी विल हैव अ लुक एट 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल Karnaugh मैप्स. द 3 वेरिएबल Karnaugh मैप और K मैप हैज 8 cells. The 8 cells can be arranged in 2 columns and 4 rows representing the column form of the Karnaugh map. Alternately, the 8 cells can be organized in 2 rows and 4 columns representing the row form of the Karnaugh map. Any of the 2 forms of the Karnaugh map can be used to simplify Boolean expressions. The simplified expressions using either of the 2 K maps are identical. Considering first the column-based 3 variable Karnaugh map, the binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 in the leftmost column of the K map or the Karnaugh map represent the binary values of variables A and B, which are written at the top left corner. The binary values 0 and 1 in the top row of the K map represent the binary values of variable C. Again, variable C is also written at the top left corner. The 8 cells marked with numbers 0 to 7 represent the cells 0 to 7 corresponding to the min terms 0 to 7 or the max terms 0 to 7 in a 3 variable Boolean expression. The cell marked 0, for example, represents the min term 0 or the max term 0, having binary value of variables a, b, c equal to 0, 0, 0. Similarly, cell marked 5 represents the min term 5 or the max term 5, having binary values of variables a, b and c equal to 1, 0, 1. The 3 variable K map based on the row representation is considered next. The binary values 0 and 1 in the leftmost column of the K map represent the binary values of variable a. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 in the top row of the K map represent the binary values of variables B and C. The 8 cells marked with the numbers 0 to 7 represent the cells 0 to 7 corresponding to the min terms 0 to 7 or the max terms 0 to 7 in a 3 variable Boolean expression. The cell marked 1, for example, represents the min term 1 or the max term 1, having binary value of variables a, b and c equal to 0, 0, 1. Similarly, cell marked 7 represents the min term 7 or the max term 7, having binary values of variables a, b and c equal to 1, 1, 1. The 4 variable K map has a square format with 4 rows and 4 columns of cells. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 in the leftmost column of the K map represent the binary values of variables a and b. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0 in the top row of the K map represent the binary values of variables C and D. The 16 cells marked with numbers 0 to 15 represent the cells 0 to 15 corresponding to the min terms 0 to 15 or the max terms 0 to 15 in a 4 variable Boolean expression. The cell marked 6, for example, represents the min term 6 or the max term 6, having binary value of variables a, b, c and d equal to 0, 1, 1, 0. Similarly, cell marked 13 represents the min term 13 or the max term 13, having binary values of variables a, b, c and d equal to 1, 1, 0, 1.
You've just seen 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल कार्नॉफ मैप्स. 3 वेरिएबल कार्नॉफ मैप जो है उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो फॉर्मेट और कॉलम फॉर्मेट. Now if you have a look at the row format 3 वेरिएबल कार्नॉफ मैप, जो लोअर रो है, सेकंड रो जो है उसमें 4 सेल्स हैं. Now if you group those 4 cells, उसमें कॉमन टर्म आपको कौन सा नजर आ रहा है? बेसिकली वेरिएबल ए. इसी तरह अगर ऊपर वाला रो उनके 4 सेल्स का एक ग्रुप बना लें, उसमें कॉमन टर्म कौन सा नजर आ रहा है? ए बार. Right, so in any kind of map, adjacent cells have common terms, and the groups which we form are based on these common terms. Now, we need to map these kind of maps. How do we map these kind of maps? Basically, we talked about several ways. अगर हमारे पास एक standard sum of product expression है, उसके थ्रू हम मैप कर सकते हैं. अगर standard product of sum expression है, उससे कर सकते हैं. truth table से कर सकते हैं. So let us start by looking at the standard sum of product form expression. उसको आप कैसे मैप करेंगे Karnaugh मैप में? Let's suppose you have a 3 variable sum of product form expression. कितने मैक्सिमम मिन टर्म्स हो सकते हैं? बेसिकली 8 हो सकते हैं. सो लेट्स सपोज पहले 3 मिन टर्म्स उस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हैं. So what do you do? Well, in the Karnaugh map, you write ones for the appropriate cells representing those minterms. बाकी जो cells हैं उनमें क्या करना होगा? Basically, you just write zeros. So let us have a look at different examples which use the sum of product expression, the standard sum of product expression, to map the Karnaugh maps. Consider the 3 variable standard sum of product expression a b c bar plus a b bar c bar plus a bar b c bar. Now what type of a K-map is required to map this expression? Since the expression is a 3 variable expression, therefore a 3 variable K-map is used to map the expression. What are the minterms in the SOP expression? The standard SOP expression has 3 minterms 2, 4 and 6. The minterms present in the expression are mapped to the corresponding K-map cells. The cells representing the 3 minterms are marked with 1s. Remaining cells are marked with 0s. Any of the 2 K-maps can be used, that is the row format or the column format. So considering the column based 3 variable K-map, 3 cells have 1s. So cell 0, 1, 0, this represents the minterm a bar, b, c bar. The cell 1, 1, 0, this represents the minterm a, b, c bar, and the cell 1, 0, 0 represents the minterm a, b bar, c bar. All these 3 cells have 1s. Remaining cells are zeros. Now consider the 4 variable sum of product expression. It is a standard sum of product expression having these 7 sum terms. The terms are a bar, b bar, c bar, d. The second term is a bar, b, c bar, d bar. The third term is a bar, b, c bar, d. The fourth term is a bar, b, c, d bar. Fifth term is a, b bar, c bar, d bar. The sixth term is a, b, c bar, d. And the last and the seventh term is a, b, c, d bar. Now these are basically the min terms of the standard sum of product expression. If you calculate the binary equivalent of these minterms are 1, 4, 5, 6, 8, 13 and 14. The minterms present in the expression are mapped to the corresponding K-map cells. The cells representing the 7 minterms are marked with 1s. Remaining cells are marked with 0s. We've just seen the method to directly map standard sum of product expressions to K-maps. बड़ा आसान तरीका है. जो भी minterms हैं वो वाले minterms जो हैं आप हर सेल में 1 के तौर पे मार्क कर दें. जो minterms नहीं हैं उन सेल्स में आप zeros मार्क कर दें. Now let us talk about marking K-maps or rather mapping K-maps using non-standard sum of product expressions. आपके expressions जो हैं standard भी हो सकती हैं, non-standard भी हो सकती हैं. Well, the easy method would be to standardize the non-standard sum of product expression. वो हमने तरीका किया था कि a plus a bar के साथ आप multiply कर दें तो आप एक non-standard expression को standard में convert करें. But with experience, with use, you can directly map a non-standard sum of product expression to a K-map. ओके, तरीका क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जब हम देख रहे थे 3 वेरिएबल के मैप को. बॉटम रो जो थी हमने बताया था उसमें अगर 4 सेल का ग्रुप कर लिया जाए उसमें कौन सी टर्म कॉमन है? ए. ऊपर वाली रो में 4 सेल्स का अगर ग्रुप कर लिया जाए उसमें कौन सी टर्म कॉमन है? ए बार. नाउ लेट अस सपोज दैट यू हैव ए नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी. नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि ये डोमेन कितना है इसका? 3 वेरिएबल का. तो पहली टर्म जो है वो सिर्फ ए है, सेकंड टर्म में बी सी है, ए वेरिएबल या ए लिटरल जो है वो नहीं आ रहा. राइट, तो अब इसको आप डायरेक्टली मैप कैसे करेंगे? बेसिकली 3 डोमेन की एक्सप्रेशन है तो आपको 3 वेरिएबल के मैप यूज करना होगा. पहली टर्म को देखते हैं ए. मैप आप क्या करेंगे? जो सेकंड रो है उसमें जहां भी आपको ए टर्म नजर आ रही है उधर आप 1 मार्क कर दें.
इसी तरह बी सी को कैसे मैप करेंगे, उसी 3 वेरिएबल जो के मैप है, जहां जहां आपको टर्म बी सी नजर आ रही है उधर वंस आप मार्क कर दें, बाकी जो रिमेनिंग सेल्स अगर बचते हैं उधर आप क्या लिखेंगे, जीरोस लिख देंगे. Now it is possible that some common cells representing the term A and representing the the term BC are used. So you don't need to mark those common cells twice, simply mark them once. So let us have a look at several examples using the 3 variable K map and the 4 variable K map, where non-standard sum of product expressions are used to map these K maps. Consider the non-standard sum of product expression A plus BC bar. A 3 variable K map is used as the sum of product expression has a domain of 3 variables. Any of the 2 K map representations can be used, that is the column or the row representation can both be used. The non-standard product term A is mapped first. The 3 variable K map cells having the term A are marked with 1s. The cells marked are 4, 5, 6 and 7. All these cells have the term A. Now, having marked all the cells having the common term A with 1s, you consider the second term BC bar. Now, using the same K map, the cells 2 and 6 are marked with 1s. Both the cells have the variable BC bar. The remaining cells are marked with zeros. It is possible that multiple terms are present in the same cell, such as the terms A and BC bar. Both these terms are present in cell 6. Presence of multiple terms in a single cell is marked by a single 1. Consider another expression, a 4 variable non-standard sum of product expression represented by D plus AC bar plus BC. A 4 variable K map is used to map the expression, as the sum of product expression has a domain of 4 variables. The non-standard product term D is mapped first. The K map cells having the product term D are marked with 1s. The 8 cells 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 all have the D product term, therefore they are marked with 1s. The non-standard product term AC bar is mapped next. Using the same K map, the cells marked 8, 9, 12 and 13 are marked with 1s, as all 4 cells have the variable AC bar. It is possible that multiple terms are present in the same cell, such as the terms D and AC bar in cells 9 and 13. Presence of multiple terms in a single cell is marked by a single 1. Finally, the third non-standard product term BC is mapped. Using the same K map, the cells 6, 7, 14 and 15 are marked with 1s. All 4 cells have the variable BC. Remaining cells are marked with zeros. Again, presence of multiple terms in a single cell is marked by a single 1. We have learned to map standard sum of product expressions and non-standard sum of product expression directly onto a K map. Now, the next and the last step is simplifying the K map, the K maps. Mapping हमने कर ली है, अब हमने ग्रुप्स फॉर्म करने हैं. Now, we talked about forming groups of 2, 4, 8 and 16. Consider the 3 variable K map. Largest group जो है कितने cells का बनेगा? 8 cells. Now, let's suppose you have a group formed of 8 cells. Output या जो simplified expression है आपके ख्याल में क्या आएगी? Basically 8 cells का group जो है, that means all the 8 terms are included. जब किसी फंक्शन के 3 वेरिएबल फंक्शन के 8 min terms included हैं, basically the output is a 1 for all min terms. ठीक है? So basically it doesn't matter what is the input, A, B, C, कुछ भी हो, output is always going to be a 1. So a group of 8 cells in a 3 variable K map is always going to give you a 1. Now a group of 4 cells in a 3 variable K map, वो कौन सी एक्सप्रेशन देगा या कितने लिटरल्स की एक्सप्रेशन देगा? बेसिकली a 4 cell group in a 3 variable K map is going to give you a single variable term. इसी तरह अगर 2 ग्रुप्स के सेल बने हैं, what is the product term you get? Basically it would be made up of 2 variables. Similarly, a single cell group would give you a 3 variable term. Now let us talk about a 4 variable K map. 4 variable Karnaugh map में largest group कितने साइज का बन सकता है? Basically 16 cells. 16 cells means that all variables, basically all min terms are included in the expression. तो जब भी आपके पास एक 4 variable expression में सारे min terms हो, what is the output? It is a 1. So a 4 variable K map में अगर 16 cells का एक group बने, the output is a 1. Let us talk about a group of 8 cells in of course a 4 variable K map. 8 cells का group जो है आपको क्या देगा? A single variable term. इसी तरह अगर 4 cells का एक group बनेगा, आपको क्या मिलेगा?
दो टर्म्स का बेसिकली दो वेरिएबल्स का एक टर्म मिलेगा। इसी तरह दो सेल्स का एक ग्रुप हो, तीन वेरिएबल्स का टर्म मिलेगा। एंड लास्टली अगर एक ग्रुप जो है उसमें सिंपली एक सेल है तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली चार वेरिएबल्स होंगे। Now let us have a look at several examples where you form different sized groups, 8 का भी होगा, 4 का भी, 2 का भी and 1 का, and then let's extract expressions represented by those groups. Consider the three variable column based K-map in which the sum of product expression has been mapped. The sum of product expression has 5 minterms marked by ones in the K-map. Three groups of 2 cells each are formed. The first group of ones comprising of cells 2 and 6 forms the product term BC bar. Now, if you view the Karnaugh map, these two cells have this term BC bar common to both the cells. The second group of ones comprising of cells 5 and 7 forms the product term AC. इसी तरह अगर इन दोनों सेल्स को देखें, इन दोनों सेल्स में जो प्रोडक्ट टर्म AC है वो कॉमन है. The third group of ones comprising of cells 1 and 5 forms the product term B bar C. Thus, the 5-term sum of product expression simplifies to a 3-term sum of product expression having the 3 terms BC bar, AC and B bar C. Consider the 3-variable row-based Karnaugh map in which the sum of product expression has been mapped. The sum of product expression has 4 minterms marked as ones in the Karnaugh map. Two groups of 2 cells each and a third group of single cell are formed. The single cell group comprising of cell 4 forms the product term A, B bar, C bar. Basically, it's a 3-variable K-map. We said that a group comprising of a single cell is going to form a product term of 3 variables. So it is A, B bar, C bar. The second group of ones comprising of cells 1 and 3 forms the product term A bar, C. We said that a group of 2 cells in a 3-variable K-map is going to form a product term having 2 variables. So it is A bar, C. The third group of ones comprising of cells 2 and 3 forms the product term A bar, B. Thus, 4-term SOP, the sum of product expression, simplifies to a 3-term sum of product expression. Consider the next example. Consider the 3-variable column based K-map. Two groups of 4 cells and 2 cells each are formed respectively. The first group of ones comprising of cells 2, 3, 6 and 7 forms the product term B. Again, it's a 3-variable Karnaugh map. A group of 4 cells has been formed, so the common term is going to be a single variable. The second group of ones comprising of cells 5 and 7 forms the product term AC. The original expression had 5 minterms. The simplified expression has 2 product terms B and AC. Consider the 3-variable row-based K-map. 3 groups of 2 cells each are formed. The first group of ones comprising of cell 4 and 5 forms the product term AB bar. The second group of ones comprising of cells 3 and 7 forms the product term BC. And the third group of ones comprising of cells 2 and 3 forms the product term A bar B. Now, the original sum of product expression had 1, 2, 3, 4 and 5 minterms. The expression is simplified. You end up with 3 product terms A B bar, BC and A bar B. Now, consider an example of a 4-variable Karnaugh map. Consider a 12-term standard sum of product expression mapped on the 4-variable K-map. 3 groups of 4 cells are formed. The first group of ones comprising of cells 8, 9, 12 and 13 forms the product term AC bar. The second group of ones comprising of cells 1, 3, 9 and 11 forms the product term B bar D. The third group of ones comprising of cells 6, 7, 14 and 15 forms the product term BC. Now, the original expression had 12 terms. The simplified expression has 3 product terms AC bar, B bar D and BC. Now, looking at the second group, 2 cells are in the first row, 2 cells are in the fourth row. As we said before, the 4-variable K-map considered to be connected together. So, the first row is connected to the fourth row. Similarly, the first column is connected to the fourth column. So, the 2 cells in the first row are assumed to be adjacent to the 2 cells in the fourth row. Consider another example, an 8-term sum of product expression mapped to a 4-variable K-map. One group of 2 cells and 2 groups of 4 cells are formed. The first group of ones comprising of cells 8 and 12 forms the product term A C bar D bar. The second group of ones comprising of cells 3, 7, 11 and 15 forms the product term CD.
And the third group of ones, comprising of cells 6, 7, 14 and 15, forms the product term BC. The sum of product expression that has been simplified has three product terms, A, C bar, D bar, CD and BC. The original expression of course had 8 terms. Now looking at the two groups of 4 cells, one of the group is a column based, 4 ones are in a column, and the other 4 cell group is a square based group. It has 2 rows and 2 columns. Consider the last example. Consider the 9 term sum of product expression mapped to a 4 variable K map. Two groups of 2 cells and 2 groups of 4 cells are formed. The first group of ones, comprising of corner cells 0, 2, 8 and 10, forms the product term B bar, D bar. Again, since the first column and the last column and the first row and the last row of the Karnaugh map are connected together, therefore the corner cells are assumed to be adjacent. The second group of ones, comprising of cells 2, 3, 10 and 11, forms the product term B bar, C. Similarly, the third group of ones, comprising of cells 13 and 15, forms the product term A, B, D. The last and the fourth group of ones, comprising of cells 2 and 6, forms the product term A bar, C, D bar. The SOP expression has simplified to a 4-term SOP expression, having terms B bar, D bar, B bar, C, A, B, D and A bar, C, D bar. We have looked at several examples of simplifying expressions, Boolean expressions using the K-maps. So K-map में हमने क्या किया था? We formed different groups. Different groups जो हैं basically वो आपको product terms दे रही हैं. Now we have discussed two methods of mapping expressions onto the K-map: standard sum of product form and non-standard sum of product form. एक और तरीका जो है जिसके थ्रू हम K-map पे मैपिंग कर सकते हैं, it is through the truth tables. Consider that you are designing some circuit or implementing some circuit. पहला काम क्या करते हैं जब भी आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं? बेसिकली आप पहले उसका फंक्शन टेबल या ट्रुथ टेबल बनाते हैं. उसमें फंक्शन टेबल में क्या होता है? जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो आ रही और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉलम में आप वंस या जीरोस लिखते हैं. Consider an example of directly mapping the information provided in a truth table onto the K-map. Let us suppose that we are designing an electronic circuit, a digital circuit, which detects the input, a 2-bit input, and finds out if the number is even or odd. अगर odd number है, the output should be 1. अगर even number है, the output should be 0. Function table क्या होगा? Basically, 2-bit input है, so you have a 2-variable function A, B. जो 4 input combinations आ रही हैं, again 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Corresponding outputs क्या होंगे? हम odd detect कर रहे हैं, तो 0, 0 combination के लिए output 0 होना चाहिए. 0, 1 combination के लिए output 1 होना चाहिए. 1, 0 के लिए combination जो है basically 1, 0 है, 2 है, so it is an even number, the output should be 0. And combination 1, 1 which represents decimal 3, since it's an odd number, the output should be a 1. Okay. अब हमारे पास function के output में 2 minterms आ गए जो represent कर रहे हैं 1 and 1 के साथ. अब expression क्या बनेगा? You could directly write the expression from the truth table, but instead you map the output directly to the K-map. K-map में कौन सा वाला यूज करेंगे? Basically you would be using a 2-variable K-map having 4 cells. So 2 of the cells would have 1s and the remaining 2 cells would have 0s. अगर grouping कर लें, then perhaps you would get a simpler product term which would represent the operation of the circuit. आप directly इस expression जो simplified expression आपको मिल रही है उसको use करते हुए circuit बनाएं and you would have a circuit which takes in 2 input or 2-bit input numbers and displays or outputs a 1 or a 0 representing an odd number or an even number. Let us have a look at a similar circuit which uses a 3-bit input और फिर output कुछ 1 और 0 देगा. हम देखते हैं उस circuit को. Consider a logic circuit that accepts 4-bit binary numbers representing decimal numbers 0 to 15. Now the circuit checks the 4-bit binary equivalent of the decimal number. So basically 0000 represents the decimal number 0, 0001 represents the decimal number 1 and 1111 represents the decimal number 15. Now if the number is odd, if the decimal number represented in 4-bit binary is odd and it is a prime number, the function outputs a 1. Before designing the logic circuit, a function table is implemented with all the input-output combinations. The function table for the odd prime number checker is shown. Now, considering the inputs and the outputs, so 0000 represents a number which is not an odd number, nor it is a prime number. So the output should be a 0. 0001 represents the number 1. It is prime and it is odd, so the function output is a 1. The input combination 0011 again represents an odd prime number. The output is represented by a 1.
The combination 0, 1, 0, 1 is again representing an odd prime number. The output should again be a 1. The input combination 0, 1, 1, 1 again represents the number 7, which is odd and prime. Therefore, the output should be a 1. Similarly, the input 1, 0, 1, 1 represents 11, which is odd and prime. The output should be 1. The number 9, 1, 0, 0, 1 is odd, but it is not prime. Therefore, the output is 0. Next, the input combination 1101, which represents the number 13. It is odd and prime. Therefore, the output has a 1. The number 15, 1111 is odd, but it's not prime. So, the output is 0. Therefore, at the output, you have some 1s and some 0s. 1s represent all the odd numbers which are prime numbers. The 4-variable function table is directly mapped to a 4-variable k map. Each of the 16 minterm values in the function table are mapped to the corresponding minterm cells of the k map. Now, simplifying using the k map gives 3 product terms which can be directly implemented using logic gates to form a odd prime number checker circuit. Now, looking at the Karnaugh map, 3 groups are formed. One group is of 4 cells, which results in the product term a bar d. There are 2 groups of 2 cells each, which result in product terms B C bar D and B bar C D. We've just looked at an example where we can directly map a function represented by a truth table or a function table directly onto a K map. اور ادھر سے ہم آگے سے سمپلیفائی کر سکتے ہیں اس میں. سو جتنے بھی آپ سرکٹ بنائیں گے بیسکلی یہ طریقہ استعمال کریں گے. آپ فنکشن ٹیبل بنائیں گے, ڈائریکٹلی کے میپ میں اس کو میپ کریں گے, سمپلیفائی کریں گے, آپ کے پاس جو ایکسپریشن ہوگی اس سے آپ بیسکلی لاجک سرکٹ بنا رہے ہیں اس میں. Now, it is possible that the inputs which you provide to the circuit, ان میں سے کچھ inputs جو ہیں وہ کبھی ایگزسٹ ہی نہ کریں اس میں. لیٹس سپوز جو پچھلی ایگزامپل ہم نے کنسیڈر کی تھی اس میں کتنی انپٹ کمبینیشنز آ رہی ہیں, بیسکلی 4 بٹ بائنری تھا تو 16 انپٹ کمبینیشنز آ رہی تھیں 0 سے 15 تک. لیٹ از سپوز کہ آپ ایک ریسٹرکشن اس پہ امپوز کر دیں. ریسٹرکشن یہ ہے کہ جو انپٹ کمبینیشنز ہیں وہ صرف 0 سے 9 تک آتی ہیں. بیسکلی یو آر اونلی انٹرسٹڈ ان ڈیسیمل نمبرز. سو جو انپٹ کمبینیشنز ہیں 10 سے لے کے 15 تک وہ کبھی ہوں گی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے. سو یو آر ناٹ کنسرنڈ about the outputs of these input combinations which never exist or which are never going to occur. اس کا کانسیکوینس جو ہے سمپلیفیکیشن پہ یا جو سمپلیفائڈ ایکسپریشن ہے اس پہ کیا ہوگا. بیسکلی all such inputs which do not occur are considered to be don't care states. So ہم بات کرتے ہیں ڈونٹ کیئر کنڈیشنز کی. ان کو کیسے ہم کے میپ میں میپ کریں گے اور کیسے یوز کریں گے اور فائدہ کیا ہے. Now, دی لاسٹ 6 انپٹس جو ہیں 10 سے 15 تک, ان کے آؤٹ پٹس میں نہ تو آپ 0 لگائیں گے نہ 1 لگائیں گے. ڈونٹ کیئر اسٹیٹس اور ڈونٹ کیئر کنڈیشنز آر ریپرزینٹڈ بائی ایکس, دی سمبل ایکس ایٹ دی آؤٹ پٹ. اس کے بعد کیا کرنا ہے, بیسکلی وہ جو فنکشن ٹیبل آ گیا جس میں کچھ زیروز اینڈ ونز ہیں اور کچھ ڈونٹ کیئر اسٹیٹس ہیں ریپرزینٹڈ بائی ایکس, ان کو آپ کیا کریں گے, میپ کریں گے آن ٹو دی کے میپ. سو کارناف میپ جو ہے وہی پچھلے ایگزامپل کو اگر آپ کنسیڈر کریں, یو ہیڈ اے 4 ویریبل کے میپ. اس میں کچھ جو سیلز ہیں ان میں 1 ہوگا, کچھ سیلز میں 0 ہوگا اینڈ کچھ سیلز میں x ہوگا. Now, what do you do? How do you consider those x's? Are they zeros or ones? Basically, آپ x کو 0 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور 1 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. It depends کہ گروپ آپ کا کس فارم میں بن رہا ہے. So let's suppose by considering 1, 2 or 3 cells having that x as 1, that helps you to form a larger group of ones. سو کیا فائدہ ہوگا, جتنا بھی بڑا گروپ ہوگا آپ کے پاس جو پروڈکٹ ٹرم ہے اتنی سمپلر آئے گی. ٹھیک ہے نا, جب ہم نے بات کی تھی کہ اگر 8 سیلز کا ایک گروپ بن رہا ہے اس میں 4 ویریبل کے میپ میں, تو آپ کے پاس ایک ویریبل کی پروڈکٹ ٹرم آئے گی. سو یو کین سیٹ دی ایکسز اور دی ڈونٹ کیئر اسٹیٹس مینشنڈ اور اسپیسیفائڈ ان دی کے میپ ٹو ونس اور زیروز ٹو ہیلپ یو فارم گروپس. لارجر دی گروپس, simpler the expression. So again, we are going to see the example which we did previously. We are going to be considering the input states 10 to 15 as don't care states. اور اس کا ہم ایکسپریشن نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا سمپلر ہمیں ایکسپریشن مل رہی ہے, سمپلر سرکٹ مل رہا ہے. So let us have a look. Consider the number checker circuit that only checks for odd prime numbers between 0 and 9. Now the input states 10, 11, 12, 13, 14 and 15 do not exist. They never occur. To represent this new circuit, the function table has to be modified. The input states 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 and 1 1 1 1 have their outputs set to x, the symbol x, which represents don't care.
Now the modified function table can be directly mapped to a 4-variable Karnaugh map. Each of the 16 minterm values in the function table are mapped to the corresponding minterm cells of the K-map, including the don't care states. In this particular case, all the don't care states are assumed to be zeros. The K-map simplification leads to the expression A bar D. Now assume that the circuit checks for odd prime numbers for the first 9 numbers, that is ranging from 0 to 8. The remaining combinations never occur. To support this new requirement, the function table is modified to include a don't care state for the input combination 1001. Now, if the new function table is mapped to that 4-variable K-map, it results in 7 cells having don't care states. The cells 1101, 1111, 1001 and 1011 can be considered to be ones. Instead of x's, they are considered to be ones. Now these 4 cells form a group of 8 if the 4 cells 0001, 0011, 0101 and 0111 are considered. So a group of 8 cells is formed, all having ones. What is the simplified expression? Basically the simplified expression would be D instead of A bar D for the previous case. So larger the group, the simpler the product term, simpler is the circuit. We have looked at an example where don't care states are used. Don't care states help us in simplifying expressions. So don't care states, as we said, are marked by x's. So x जो है उसको 1 भी आप assume कर सकते हैं, 0 भी assume कर सकते हैं, depending on other groups of ones. So ultimately एक simpler expression आपको मिल सकती है. So don't care states are commonly used with different logic circuits where some input conditions are never going to occur. We are going to stop for today. बेसिकली आज हमने बात की थी मैपिंग ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस टू द के मैप. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड बात की थी. फिर हमने ये कहा था कि अगर एक फंक्शन टेबल है उसको आप डायरेक्टली मैप कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन की बात की थी हमने. बेसिकली जब आपने के मैप में एक्सप्रेशंस मैप कर ली, वंस एंड जीरोस, ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, ग्रुप्स से आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स, सिंपल प्रोडक्ट टर्म्स आ जाते हैं. सो अल्टीमेटली यू हैव ए सिंपल एक्सप्रेशन विच यू कैन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट यूजिंग लॉजिक गेट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं. इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे के मैप्स को और किस तरीके से मैप किया जा सकता है, और मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन की बातें करेंगे. हमने 5 वेरिएबल के मैप की बात नहीं की, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.